Okay, good afternoon, everyone. Um, I hope I am audible. So, today there is a slight change of plan. The hands on session will happen before the theory session. Sir will be taking the theory session at 4 o'clock, and I'll take the hands on session now. We, we will continue where we left yesterday. That is, we were discussing about PEFT models, and thereafter we will try to build a language model, a small language model for ourselves. Okay, using the same IMDb dataset, we will build a text predictor. Okay, so let me just share my screen first. Yeah, okay. So yesterday we had seen how we can load a pre-trained model from Hugging Face, and using the pre-trained model we loaded a GPT-2 model, and we saw its architecture. And using the GPT-2 model, we saw how we can generate embeddings from it. We also discussed what embeddings really are. They are the output of the last transformer block. And using those embeddings, uh, we can do many kind of downstream tasks. Okay. Then we also saw how text generation is performed, or rather what a generative model is. We saw that a generative model is nothing but a classifier over the vocabulary. It predicts one token at a time, and since they are autoregressive in nature, the newly predicted token sort of goes back and appends itself to the input, and then again it is given to the transformer to generate the next word. That's how the next word prediction task continues. Okay. No, so we are just getting started, Amit. We'll start with the same PEFT model that where we left yesterday. Okay. So we saw three approaches: a greedy approach, a sampling approach, a beam search, and we also discussed about top P sampling. So top K sampling and top P sampling. K was where we sort of select a fixed number of K values from this distribution, and then out of those randomly one word is printed, is output by the transformer, and then that becomes input for the next step. So that is the top K model. In top P, we decide on a threshold for P, say 80%, and we select all those values where the total amounts to 80.8, and then out of those words we select particular word and output it. That was top P. Then we also talked about beam search and how beam width affects the number of generations, right? If our beam width is 2, we are basically at each step doing 2 predictions, and again out of those 2 we are keeping a track of 2 outputs in first case and 2 outputs in the second case, and then out of those 4 again we only keep the top 2 and discard the others. Those 2 are selected based on the joint probability, the cumulative probability. Okay, so that was beam search. So we had discussed greedy sampling and beam search. Then we sort of spoke about fine tuning, and in fine tuning we had discussed that when we fine tune a model, all the parameters are touched. When we have a model like GPT-2 model, that is the model up till the embedding remains constant,
and we can train a head for each individual task. So that is one way to train a model. In that, all the lower layers remain fixed or frozen. The terminology used is usually frozen, and this head, that is this matrix E cross V or E cross 3 depending on the task, can be trained independently. So that is as good as using embeddings. Okay, so there are two ways that we already discussed. One was using the embedding, where this embedding is sort of generated by this pre-trained model, is used for all tasks. There is nothing task specific until the embedding, right? So that was approach one. And the approach two was where we fine tune our entire model for each task. So the problem that we discussed with fine tuning a model for each individual task was that all the parameters get touched, get influenced. So the training time is huge because the number of parameters here are huge compared to, as we saw, if we have an embedding of 768 and we have three classes in our output, so we have only 768 cross three parameters here, but we have around 150 million parameters here in the transformer itself. So if we start training all these parameters for each task, it becomes very daunting. It becomes very slow. The training is very slow as compared to you first generate an embedding and train only the head. So that is a very small matrix to train, right? These number of parameters are very small. So this is actually a faster approach where we train only the head, but then it is not very efficient in the sense the representation of the text itself does not change. What changes is only how we deal with the representation, and that is only the head has changed. So that is not the best way to train a model. Fine tuning delivers much better performance in terms of quality. In terms of training time, it takes a lot more time, but in terms of uh, quality, the quality is much higher when we fine tune a model to a particular domain. So we had discussed an example that suppose we are training two classifiers. One is on IMDb dataset and one is on a legal dataset. So both of them have very different kind of terminology. One is a very emotional kind of text, and other is a very formal text with a lot of jargon, legal jargon, right? So uh, we want the model to have lower level understanding or a deeper understanding of the text. That is why we fine tune. So problem number one with fine tuning was it was very expensive to fine tune a model because the number of parameters here are too many. And problem number two was once we fine tune a model, this model is no good for other tasks. I mean, the one that performs well on IMDb will likely not perform as good on the legal data set. Okay, so this was the sort of motivation that we discussed, that why do we need something else. So although this approach is very flexible, we can keep this embedding and then we can simply add and remove heads based on whatever our need is. But the problem with doing that is the representation is not rich enough. It is not contextualized because the training corpus is generic. So this embedding remains generic for all domains. So that's why the quality is not as good. Even though the performance is very good, the flexibility is very good, we can use the same base model and we can have different heads on top of this model. But then what we lose is that uh, our representation is not that rich. So we gain speed, but we lose quality. So to balance both the things, we had discussed that PEFT is a solution which is called parameter efficient fine tuning. So parameter efficient fine tuning aims to train an adapter. It aims to train an adapter over an existing network. Okay. So first,
let's sort of revise what exactly an adapter is. We had said, let's say this is our original GPT-2 model. We are giving an input here, and then we are getting an embedding out here. The dimensions of input are 768. The dimensions of the embedding are 768 as well. Okay. Uh, Now, one way to build adapters specific to tasks is that we can have exactly similar number of parameters here, a same 768 input, and it something that outputs 768 dimensions, and the same input is given to this as well as this. So we don't modify the parameters of this. Okay, just like in case of when we were using embeddings, we were training only the head, and all the part till the head, that is the part that was generating the embeddings, this was frozen, right? So similarly we keep this base model frozen and we have an embedding. But what happens when we fine tune a model? Rather than the original embedding E, we are getting a new embedding called E dash. Let's call it E dash. That's what is happening in true sense. When we fine tune a model, our embedding changes slightly. It adapts to the particular domain. So if we were getting an embedding E, we are now, in case of fine tuning, we get an embedding E dash. So there is a difference between E dash and E. So if we can have a matrix which can only identify what that difference between E and E dash is, that exactly would be an adapter. Okay, let me repeat this. If we compare our embedding to our fine tuned embedding, so we get a slight difference in the values. Let's say we have an embedding, original embedding E, or I'll call it EO, original, and then we have an embedding which is after fine tuning. So there will be some gap between these two, the original embedding and the fine tuned embedding. There will be some delta in between this, right? We will uh, we will always get some kind of difference between these two embeddings. So with an adapter, our aim is, if we can generate only that data, if this adapter network can identify or can produce that delta given the input, we can then add it back to the embedding, and then what we are left with is E original minus EFT. Okay, so what basically this is our E original and this is our delta. So okay, let me write it better. Let's say I'll call the delta D. Our delta is E original minus E fine tuned. Okay, so what we can also do is, that basically means E underscore fine tuned can also be written as E original minus the delta. Okay, so this and this are exactly the same equations. Both the equations are exactly the same. I have just what I've done is, so since we want an impact which is as good as the fine tuned model, we want an impact which is as good as the fine tuned model. We wanted this embedding, a fine tuned embedding, but we didn't want to pay the price. Okay, we did not want to pay the price for fine tuning. We wanted a lightweight solution as to how we can get the same quality as a fine tuned model, but then uh, we don't have to touch all the parameters while training. Okay, so what we are trying to do is, there is an original embedding, there is a fine tuned embedding. Suppose the difference between both of them is D. So what we can say is, our EFT, which is our embedding fine tune, is E original minus D minus this delta. I'm just moving the terms around. So in essence, what is happening is, if we can train a network for D,
if we can train a lightweight network for this difference D, then we can get our fine-tuned embedding in low cost. Okay, that is the idea for adapter. So why do we place a separate adapter here, a separate matrix here, is because, so this embedding, this gives us the original embedding. What we want to, or rather, instead of adding, I would rather say uh, uh, instead of adding, I would rather say that we are subtracting here. Okay, a subtraction operation happens here. See, the original embedding and the embedding which is fine tuned are subtracted. So this gives us E original, and this gives us the delta, and this gives us the delta D. Okay, yeah. So if we can train a small separate matrix which can take the input and generate this difference D that we would have got in case we were using fine-tuned embeddings, what we can do is we can then add these two things, and then at the time of training, what we can do is we can have our labels here, and we do the same, the regular training process. How do we simply train? That we get an output and we compare it to our label, and we do a loss comparison, and then we backpropagate the loss. So at the time of backpropagation, the loss flows only through this path because this part is frozen. These are not parameters, right? So we don't update these weights. We keep these weights frozen only through this path. Okay. So this is how, this is the idea, this is the basic sort of the mathematical intuition behind training an adapter, that we want this particular block only to learn that difference between the IMDb embeddings and the original GPT-2 embeddings. When we build an adapter for, say, the legal scenario, in that case, what we want is that the legal adapter should only learn the difference between the original embeddings as well as the legal fine-tuned embeddings. That is the idea. So I hope this bit is clear. Do you have any questions? Please, if you have any questions, please write in the chat box. Or any doubts. How do we validate the results we get from these LLM models when we use real-time datasets? This means when there are no benchmark datasets to validate our results. For example, if we retrieve real-time social media data like Facebook emotion text data, yeah, so benchmarks are actually specific to a particular problem, right? Say, for example, if you are doing sentiment analysis, so for sentiment analysis, you will have certain benchmarks, okay? And you evaluate the performance on those particular tasks. So you can train your model on whatever data you want, but at the time of reporting the quality, you will have to do the inference of your model on all the benchmark text itself. All the benchmarks will provide you with some kind of text and some kind of labels so that you can evaluate your model against that benchmark and report a result. ओके, तो अगर सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो तो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए पहले से कुछ बेंचमार्क्स होंगे, उन्हीं का डेटा आपको अपने मॉडल के थ्रू दे के सेंटिमेंट जनरेट करना होगा, एंड देन कंपेयर इट टू द सेंटिमेंट दैट दे थिंक इज राइट, एंड देन उससे जो आपका डिफरेंस आया है वहां पे एक्यूरेसी आप रिपोर्ट करोगे. So you can train your data on live social media data or whatever data you want, but आप जब benchmark evaluate करते हो तो existing benchmarks ही use करने होंगे. And if you are working on a problem जिसके benchmarks अभी तक है ही नहीं, if you are working on a novel problem without any benchmarks, then what makes more sense is to first build a benchmark
and rather write a paper on how can you how should that particular task be evaluated. Okay, if you see that, if you see a gap in the literature that a benchmark is needed but it is not present, in that case you should first write a paper on the benchmark itself. Okay, any questions related to adapter? Is the concept clear, that why do we really need an adapter? Evaluation metrics for this LLM, meaning I did not get your question. There are evaluation metrics based on individual tasks. Okay, so if you are doing classification, you will probably use F1 score or uh, accuracy or MCC or something like that. Similarly, what kind of metrics are you talking about? I mean, what is the task that you are performing with the LLM? If with an LLM you are performing text summarization, there are different metrics for that, blur score, etc. ROUG score. Label generation, classification, it's the same thing, right? If your class is balanced, accuracy is good enough. If classes are not balanced, F1 score and etc. I mean, simple classification metrics will do. So अगर आप सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स will do. Okay. For text generation, usually perplexity is used. Uh, uh, Perplexity score is usually tracked. It should constantly keep decreasing. When your model is trained, the generated text should have a much lower perplexity. So a snippet from the same corpus on which you are training it, if if you present that snippet to your trained model and calculate the perplexity value should be low. Okay. So yeah, in case of adapters, so इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका यही है अडेप्टर्स को, कि थिंक ऑफ इट एज अ सिंगल मैट्रिक्स. ओके, विच इज 768 क्रॉस 768. सो अभी पैरामीटर्स इतने ज़्यादा हैं, 768 बाय 768. अभी हमने ये अडेप्टर लगा के ये तो कर लिया कि ओरिजिनल एम्बेडिंग इज सॉर्ट ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम द फाइन ट्यून्ड एम्बेडिंग, एंड नाउ वी कैन हुक दिस अडेप्टर और वी कैन हुक अनदर अडेप्टर, and we can sort of leave this model untouched and still get multiple uh, multiple adapters, and we can get embeddings for different fine-tuned tasks. Okay, various fine-tuned tasks. ऐसा we've been able to achieve this, but still, if the number of parameters are same, यहाँ पे भी 768 768 and here also 768 768, it doesn't make much sense, because see, original GPT model is trained on billions and trillions of tokens. Okay, and in our IMDb dataset, the number of tokens was very, very less. Uh, we had some 4 lakh unique tokens. So at max, we'll have probably 1 million tokens. And 1 million is nothing compared to billions and trillions. So we don't really need these many parameters to store that kind of a representation. Okay. So that is why. And another thing is, uh, if we have an adapter which is exactly the same size as the original model, what we will end up with is a very slow model, because we have done nothing but increase the time of inference. पहले हम एक matrix के through जा रहे थे, अब हम एक की जगह दो से जा रहे हैं. So although the training will be exactly the same, because
earlier we were uh, training this matrix, now we are training this matrix, and if both of them are same in size, there is no benefit. Okay, so so to gain performance and to reduce the number of parameters, what we do is, rather than having a single big matrix, we split it into two matrices. And here we use a very small number to reduce the dimensionality, and we call this the rank of the adapter, right? So that's why the name of the technique is low rank adapters. Okay, low rank adaptation, this is the name of the technique. Okay, so what you are doing is you are selecting a very small number k, which is the rank, in this case 4, and then the number of parameters reduces from 768 into 768 to 768 into 4 plus 768 into 4. So this is simple linear algebra. You are basically, but then yes, since we reduce the number of parameters, we also lose our capacity to store information. So we have to keep this number optimal. We don't have to make it too small, but usually in practice this number is as small as 4 or 8 or 2. So yeah, this is the idea. Okay, we can have low rank adapters. So rather than this input going here, what we will actually have is this input will go here, and then this is what will give us our d value. Okay, and training this is far easier compared to training this or this, because the number of parameters here are huge, the number of parameters here are too small, okay, compared to them. So I'll yesterday I wanted to show you an example of PEFT. Okay, and you see the number of parameters reduces. So total number of parameters in GPT-2 model that we were using yesterday, that was 125 million. Okay, all parameters were 125 million. So if we fine tune, parameters get affected, but look at the trainable parameters, only 800,000. Okay, so which is like 0.64%, not even 1%, 0.64%. So this is the gain that we get out of PEFT. Okay, okay, so in case of implementation, it's not very hard. In case of implementation, uh, the same provider, Hugging Face, also provides us with a library called PEFT. Okay, so what we were doing yesterday was, when we had to train the model, we were using a trainer class, and we were giving it our model. We were giving it some training arguments that we had set here, in which we had decided what our learning rate is going to be, what how many epochs do we want to train it for, and where do we store our output model. So we give those arguments, we give our data collator, which kind of pads the input data and makes all the strings fixed sized. And then here was our tokenized data set, which was a data set having a list of words, rather than list of tokens, rather than a simple strings. Okay, so this was our tokenized data set, arguments and the model, and then we simply say trainer.train and it does the fine tuning. And then we did a small inference and we saw that, okay, we are getting this. So similarly, in case of PEFT model, what the only thing that changes is, instead of model, we use our PEFT model. Okay, and how do we get a PEFT model? So a PEFT model can be obtained by using this library from Hugging Face, which is called PEFT, and we simply give it our configuration. So I told you about one of the techniques, which was, so PEFT is a set of techniques. Okay, just keep that in mind. PEFT का मतलब है पैरामीटर ट्यूनिंग. ओके, सो पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करने का यही एक तरीका नहीं है. दिस इज वन वे दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड दिस वे इज कॉल्ड लोरा, लो रैंक अडेप्टेशन. Okay, so LoRa is just one of the ways of PEFT. There are other ways as well. Orthogonal fine tuning एक होती है, BOFT एक होता है, अलग अलग मेथड्स हैं. तो हगिंग फेस की साइट पे इसके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है PEFT के बारे में. I would recommend you to go and look at
the documentation provided by Hugging Face. Let's see if we can pull it up. Okay, so PEFT, there are techniques of PEFT, OFT, BOFT. Look at the adapters, kind of adapters on the left. Okay, so there are so many adapters are available. Okay, the what we are looking at right now is one which is low rank adapter, this LoRa. But then there are so many other adapters which are available. So you should go and take a look at this page. This is Hugging Face PEFT documentation. Hugging Face has a very good documentation website. You can take a look at this here. There is a documentation on the transformers library. There must be something on the datasets library that we were saying. And there are diffusion models as well which are provided. Okay, so all you can get all those models from Hugging Face here. So this is their primer on PEFT, and it will really help you if you are training models on low resources, because हम लोगों को GPU usually available नहीं होता है, that becomes the bottleneck. So rather than, और हम इसीलिए हम फाइन ट्यून नहीं कर पाते हैं बड़े मॉडल्स को. So as we discussed that when we fine tune all the parameters get influenced, इसीलिए VRAM GPU memory बहुत ज़्यादा लगती है. So that is why the best way to do is using PEFT. Okay, उससे हमारी quality भी ठीक रहती है and we can fine tune in low resources. Okay, another resource that I want to point you to is unsloth.ai. These guys are the experts on running, or rather training on low resources. Okay, so in these people will provide you ready-made notebooks to fine tune a model on the data set that you want. You just have to plug in your own data set and you can fine tune all the models that are available here. Okay, so see, these models were released, I mean this was released yesterday, and today they have a guide on how to fine tune this particular model. Okay, so Unsloth is very good for inference as well as fine tuning on local hardware, on hardware that is consumer grade. Okay, so this is one important resource for you. Okay, so yeah, coming back to PEFT. So from PEFT, in just like we were using the trainer, हम लोग पहले एक configuration दे रहे थे and then we were simply saying trainer dot train, right? So trainer बनाते टाइम पे हमने एक configuration दी, ये trainer है, इसको हमने एक argument दिए थे, ये हमारी सारी configuration थी training की, and then we were creating a trainer object and we were simply saying trainer dot train. Similarly, what you do is you create a LoRa config object and you simply call this function get PEFT model. This function needs only two things, your original model as well as the configuration. अब हमने configuration में क्या दिया है ये देखिए, r is equal to 8, so rank is 8. In this example I'm using r is 8. Okay, and so LoRa alpha is another parameter for scaling. The idea is that when we are dealing with, okay, so I have to tell you one more detail before I get into this. So target modules, this thing. So usually in a transformer, as we had seen, there are so many layers. Now only the dense layers, that is the linear layers. अब layer norm में PEFT लगाने का कोई sense नहीं है. So rather than having a single adapter, हमारा network इतना simple नहीं है, right? It's not a single matrix which is 768 into 768. Yes, rank and alpha, both of them are required for fine tuning. The lower the rank, this is the rank number. Okay, so the lower the rank, the lesser will be the parameters, but lower will be the quality. So the faster will be the training, but lower will be the quality. So this is the number that you can adjust to tune uh, the rank of the matrix. And alpha को alpha scaling के time पे काम आता है.
बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट हम जब GPT-2 की बात करते हैं, सो GPT-2 इज नॉट अ सिंपल मॉडल, राइट? इट्स नॉट अ 768 बाय 768 मैट्रिक्स. सो जहाँ जहाँ पे भी डेंस मैट्रिक्स है, उसको हम रिप्लेस करके इस तरह के अडाप्टर से रिप्लेस कर देते हैं. सो इफ वी लुक एट आवर GPT-2 architecture, there are 12 transformer blocks. Okay, there is a first we have an embedding layer, positional embedding add हो जाती है. After that, there is an attention layer. Attention layer के बाद there is normalization layer now, and then there is a feed forward layer. तो ये एक dense layer है, right? And बाद में finally output करते टाइम पे यहाँ पे हमारे पास dense layers होती हैं. So what kind of layers are we replacing from LoRa या low rank adapters? So that is also something that we can specify in the API. यहाँ पे हम बता सकते हैं कि टारगेट मॉड्यूल्स में हमें ये सी अटेंशन एंड सी प्रॉच, ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं, अब ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे मॉडल के आर्किटेक्चर में, जहाँ हमने स्टार्टिंग में देखा था. ओके, सी अटेंशन एंड सी प्रॉच. ओके, सो इन दिस केस ये अटेंशन की लेयर को चेंज कर रहे हैं. अटेंशन की लेयर की जगह पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं लो रैंक अडाप्टर्स से. बट यूजुअली व्हाट इज डन इन मॉडर्न ट्रांसफर, ये GPT-2 का आर्किटेक्चर भी ओल्ड है. इन द न्यूअर आर्किटेक्चर यू विल सी QK and V, जो सर ने पढ़ाया था. QK and V आपको वैसे वाले बहुत पैरामीटर्स मिलेंगे. एंड इट हैज़ बीन एम्पेरिकली टेस्टेड दैट की एंड वैल्यू, these two gain the most when they are replaced with LoRa. उनकी जो मेट्रिसेस है, उनके जो वेट मेट्रिसेस है. सो हमारी एक एम्बेडिंग होती है सबसे पहले. ये जो एम्बेडिंग टेक्स्ट एंड पोजिशनल एम्बेडिंग आती है, इसको हम तीन मेट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? WQ, WK एंड WV. उससे हमें तीन अलग अलग वेक्टर मिलते हैं, एक Q, एक K और एक V. सो ये जो तीन मेट्रिसेस हैं, ये भी एक डेंस मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा ही कुछ सिमिलर टू दिस. इसी तरह होता है. तो इन मेट्रिसेस को रिप्लेस किया जाता है. इन पर्टिकुलर K and V वाले जो मेट्रिसेस है, Q को नहीं छेड़ा जाता है. दैट इज द एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन. आपके यूज केस में कुछ अलग भी हो सकता है. तो इट्स ऑलवेज ट्राई व्हाट यू आर डूइंग, ऑलवेज ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. बट या एम्पेरिकली इट हैज बीन सीन, या इनफैक्ट डिफॉल्ट सेटिंग भी पेफ्ट की यही होती है कि K and V, ये जो दो मेट्रिसेस होती है वेट्स की, those are the ones that get first replaced while doing PEFT. Okay, so and then yeah, then you get a PEFT version of the model. So this is sort of the PEFTified version of the model कि आपने get PEFT model इसी में दिया हुआ है PEFT में. So you call this function with this particular configuration. यहाँ पे आपकी configuration, even if you are not using LoRa, you are using something else like OFT, या if you are using something else, वो जितने adapters की list अभी आपको दिखाई थी, तो उनमें से कोई भी adapter लेंगे तो उसकी configuration आप यहाँ पे डालेंगे, and then you can get a PEFT version of the same. उसके बाद if you print the trainable parameters, it will show you the stat, what percentage of training are you saving on. So you are actually saving so much. Okay, you've reduced the number of trainable parameters from 125 million to not even 1 million. This is 0.8 million, 800K. And then you train it simply, instead of rather than the model, you give it a PEFT model. That's it. Argument में everything is same, just this name is different. I'm saving it to a different directory, and then I'm calling the trainer with the PEFT model this time instead. Rather than a simple model, I'm calling it a PEFT model. Okay. So yeah, that was it about PEFT. Now, if you have any questions, I'll take them now, and then we'll wait for 2-3 minutes, and then we'll start with the next session, the language model. Okay, let me yeah, this is the highlight. Okay. Okay.
Okay, so let's start with a simple language model in PyTorch. Okay, we have so the idea is that we all use LLMs, right? Those are really large language models. So I wanted to build a very small language model. So I've used the IMDb dataset itself to build a generative language model. Uh, on the first day, we did text classification using a language model, but this is a generative model. So here, what we'll do is I just wanted to show you how uh, this part happens. How is uh, how is a model basically generate vocabulary and then uh, a distribution over the entire vocabulary, and how we choose the next word and how we proceed with that. Okay, so yeah, we all have uh, seen this, right? This is a mobile keyboard, and this sort of gives you a few suggestions, right? Yesterday, I think some of the members had pointed out about n-grams, and this model works. This keyboard works using an n-gram model. So I think the research says 3 or 5 length n-grams are sufficient for predicting what you are going to type. Yeah. So if you say forward to a new, it yeah, look forward to a new, and then it will give you 1 year look, etc. Okay. So the most important prediction that this keyboard is giving you is year. So a language model is basically nothing but a model that can give you the probability of the next word, right? Next word prediction. So that is one of the ways to make a language model. A language model is nothing but a model that understands language. Now, understanding के कई मतलब हो सकते हैं, या a way language can be modeled can happen in various ways. One of them is next word prediction. So all the decoder models etc. work in this fashion. GPT-2 या generative models जितने भी हैं वो सब, they all work in the next word prediction task. Okay. Okay, so our template is going to remain exactly the same what we saw on day one, that we will import some libraries, we will load and prepare data, we dictionary, tokenization, etc., etc. And then we will basically define our model, then we will train it using an optimizer, and after that we will see model train हुआ है कि नहीं, and then we will do a perform inference and see हमारा model कैसा perform कर रहा है. Okay, so it's going to remain the same, but yeah, the difference is that this time this model definition will be different. It will be a generative model this time. Okay, yeah, so this is more about the language model. So if you can say that probability of I saw a cat on a mat. So what does this mean? इसकी probability का मतलब क्या है कि how often does this text appear in a given corpus? So this probability makes sense only with respect to a particular corpus. तो एक कॉर्पस में इस तरीके का सेंटेंस या यही सेंटेंस एग्जैक्टली कितनी बार आया है, उससे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 7 सेगमेंट के जितने और कॉम्बिनेशंस हैं उनमें से ये वाला कॉम्बिनेशन कितनी बार आया है. इफ यू कैन फाइंड दैट आउट देन दैट विल बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. सो वो कैसे निकालते हैं? दैट इज द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 गिवन आई, मतलब आई के बाद 100 आया, ऐसा कैसे होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 गिवन दैट आई हैज ऑलरेडी अपीयर्ड, then probability of a given that I saw has appeared, and so on, right? And probability of mat that I saw a cat on a, ये इतना हो चुका है. If in your n-gram 1 2 3 4 5 all these characters are available and only
then the next word prediction is खाली all the combination starting with I saw a cat on a, if we are looking at that, उसमें से mat कितनी बार आ रहा है, if we can find that out we can get this term. Okay, and when we multiply all these probabilities we get the probability of I saw a cat on a mat. Okay, similarly अगर हम so but this is अब ये this is the entire corpus की probability. इसमें क्या होता है वो the numbers become very very small. Okay? In case of a n gram model what happens, say for example अगर हम 3 gram की बात कर रहे हैं, so 3 gram का मतलब है कि we are looking at only the combination of 3 words कि probability of the last word given that previous two have occurred. So I saw a cat on a mat को अगर 3 gram में break करेंगे तो कैसे होएगा, I saw यहाँ तक 3 ग्राम है. इसके बाद if you see probability of cat will only consider cat, and saw, that's it. I को हम ignore कर देंगे. So I यहाँ पे कट गया. So it becomes cat saw a, and then on a cat on, mat on a. Okay. So this is going to be our basis for today's model. So today we are going to make a 5 gram model. Okay. So for 5 ग्राम की है ना शायद, हाँ आई थिंक 5 ग्राम या 6 ग्राम मॉडल है, आई थिंक 5 ग्राम मॉडल है. सो फॉर अ 5 ग्राम मॉडल व्हाट वी नीड इज वी नीड ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंथ 5. हमारे कॉर्पस में जितने भी 5 के कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे अगर ये कॉर्पस दिया है आई सॉ कैट ऑन अ मैट तो हम उसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, आई सॉ अ कैट ऑन एटसेट्रा. ओके. Okay, and we are going to use LSTMs to model this. Why LSTMs? Because LSTMs have a benefit of having a long-term memory. So LSTM में दो तरह की स्टेट होती है. This is the long running state. ये चलती रहती है, इसी में से हम बीच में से कुछ फॉरगेट कर लेते हैं और इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, राइट? ये फॉरगेट कैसे करना होता है? दिस हैपेंस बेस्ड ऑन द इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस आउटपुट. प्रीवियस सेल का जो भी आउटपुट आया था, इन दोनों के बेसिस पे. सो दिस इज द शॉर्ट टर्म आउटपुट एंड दिस इज द करंट इनपुट. तो इन दोनों को देख के हम एक फॉरगेट गेट बनाते हैं एंड इसमें से कुछ फॉरगेट कर लेते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हम एक कैंडिडेट इनपुट प्रपोज करते हैं और उसका कुछ फ्रैक्शन यूजिंग द इनपुट गेट इज सिलेक्टेड एंड एडेड टू द लॉन्ग टर्म स्टेट. सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक so this is modeled exactly on our daily life. Okay, so हमसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो हम थोड़ा सोचते हैं, कुछ आंसर निकालते हैं एंड बोल देते हैं. so we have a long term experience, a long running state C. हम उसमें से कुछ कुछ चीज़ें भूलते रहते हैं और कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं, राइट? द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग एंड एडिंग टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों यहाँ पे है. एंड शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन भी हम इससे कर सकते हैं कि हमने कुछ इनपुट दिया तो उसके बदले एक शॉर्ट टर्म आउटपुट आ गया. ये शॉर्ट टर्म आउटपुट इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म आउटपुट इटसेल्फ. ओके, तो ये CT में से ही tan h लगा के हमारा ये शॉर्ट टर्म आउटपुट आता है, tan h of CT. एंड अगेन देयर इज एन आउटपुट गेट कि हम पूरी लॉन्ग टर्म मेमोरी एक साथ आउटपुट नहीं कर देते. पूरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से जो हमें इस मोमेंट पे चाहिए, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम आंसर देते हैं. सो दिस फॉरगेट गेट या ना सॉरी दिस आउटपुट गेट, ये वाला जो है दिस आउटपुट गेट, व्हाट दिस डज इज कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, खाली उतनी चीज फिल्टर कर देगा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से. ओके, सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड LSTMs. We use this LSTM sort of to model our n-gram, क्योंकि n-gram में हम जो भी 5 ग्राम या 6 ग्राम जो भी बनाएंगे आज, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लॉन्ग सीक्वेंस चाहिए. ओके, सो RNNs में हमने देखा था उसको ट्रेन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. ऑल्दो आवर सीक्वेंस लेंथ वाज लार्ज, इट वाज आई थिंक 128 या 256 लिया था हमने, which is already too large. But then yes, RNNs are not good for longer sequences. LSTMs are far better and they generalize well because of having a long term state. तो अगर हम मूवी रिव्यूज पे बिल्ड कर रहे हैं, हमारे मूवी रिव्यूज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू व्हाट वी यूजुअली हैव. सो ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. सबसे पहले we will sort of okay, so this is a different tokenizer that we are using here.
NLTK इज नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, एक लाइब्रेरी है, उसमें लैंग्वेज के बहुत सारे यूटिलिटीज़ हैं। तो इसमें हमने जो वर्ड टोकनाइजेशन का फंक्शन वो इसमें से लिया है। ओके, सो NLTK का एक NLTK इस बेसिक कॉर्पस के ऊपर बना हुआ है, एंड we simply, this is a prerequisite for using that tokenizer function. Okay, these are all the imports that we will be needing. We will be needing PyTorch, we will be needing this is the one word tokenize जो मैं बोल रहा था. We will be using Hugging Face datasets for the IMDb dataset. This is something exactly same जो हमने परसों यूज किया था. And then some utilities for plotting, and this collections counter you remember for the vocabulary and tokenization. उसके बाद TQDM is for the progress bar. Okay, so we load and prepare the data. We load the IMDb dataset. So all this, you should be familiar with all this. इसमें ये सब चीज़ें सेम सी दिखेंगी आपको. थोड़ा सा हाँ यहाँ पे कुछ क्लास में डाल दिया है. The tokenizer has been packaged into a class, otherwise things are fine. Yeah, first हम सारे यूनिक टोकन्स काउंट कर लेते हैं काउंटर में, रादर देन यूजिंग. इफ यू रिमेंबर हमने क्या किया था, हमारा जो टेक्स्ट था, अब यहाँ पे क्या है हमारा, अच्छा एक बार डेटा सेट, IMDb डेटा सेट इज समथिंग वो हमने पिछली बार भी देखा था. तो IMDb डेटा सेट में बहुत सारे मूवी रिव्यूज हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग फॉर रिव्यू इन आवर डेटा सेट, सो डेटा सेट वेरिएबल में यहाँ खाली ट्रेन वाला हमने पार्ट लोड किया है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वैलिडेशन बिकॉज हम लोग अभी सिर्फ लैंग्वेज मॉडल बिल्ड कर रहे हैं. तो लैंग्वेज मॉडल बिल्ड करने में ऐसा कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, मतलब इन द सेंस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. Okay, so then we are going to use a counter to count all the tokens, and dataset tokens will be our list of all the unique tokens. Okay, फिर काउंटर में हम वो सारे एक एक टोकन का काउंट रखेंगे, और रादर दैन यूजिंग टेक्स्ट डॉट स्प्लिट जो हमने पिछली बार किया था जिससे हम स्पेस पे स्प्लिट कर रहे थे, उसकी जगह पे हमने इस बार वर्ड टोकनाइज यूज कर दिया है. तो word tokenizer is what we imported from NLTK, which is slightly an upgrade compared to our simplistic split function. Okay. उसके बाद we get a counter dot update review tokens, and then तो जो भी इस पर्टिकुलर रिव्यू में जितने टोकन्स थे हमने वो काउंटर में ऐड कर दिए, उन सब की फ्रीक्वेंसीज बढ़ा दी एक एक करके, एंड देन उन सबको डेटा सेट में डालते चले गए. ओके, ऑल राइट. Then we build a vocabulary class. This class is exactly the same. हमने word to index एक ये build किया था, which given a word we were generating its indices, right? Given this word I loved it, we had converted it to these three indices. I is appearing on 101 position, loved is appearing at 5892 position, it is appearing at 45 position. क्यों किया था ये? क्योंकि PyTorch की embedding layer ये फॉर्मेट में इनपुट एक्सपेक्ट करती है. ओके, so which is why, so यहाँ पे भी similarly we do two things. There is an S2I and I2S. S2I is our word to index, string से लेके index पे जो convert कर रहा है, and I2S is the opposite one. अगर हमारे पास एक इंटीजर है, एक इंडेक्स ऑलरेडी दिया हुआ है जो हमारा मॉडल आउटपुट करेगा, डिकोड फंक्शन में हमारे इम्प्लीमेंट करने में ये काम आएगा बेसिकली, राइट. दिस इज आवर डिकोड फंक्शन की एक, जब मॉडल आउटपुट करेगा तो वो इंडाइसिस के फॉर्म में आउटपुट करेगा, राइट. वो वन हॉट वेक्टर देगा, वन हॉट वेक्टर को हम कन्वर्ट करेंगे एक इंडेक्स में, और उस इंडेक्स को हम जब हम उसको उससे स्ट्रिंग हमको फेच करनी है तो वी गिव इट, वी यूज I2S फंक्शन एंड वी गेट द करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग. Okay, we convert the index to a string using the I2S method. Okay, so this vocabulary class is nothing but it has these methods, uh, I2S and S2I. These are the useful ones. इसको रन नहीं किया शायद. Okay, this might take some time. It will iterate over the entire data set.
And now we build the vocabulary class. So we get a vocabulary of 49,447. Okay. So here, whatever numbers you want to try, you want to see what's on 0, what's on 5, what's on 1004, whatever. So 0 is for unknown, 5 is for curious yellow, 1005 is for lack. Okay, so all these English words, and we are getting the, we are sort of converting. This is what our model will be outputting, right? Something numbers like this, and we will have to convert this back to text. So we will use the to text function, this to text function. Okay. Okay. All right. So we are training on training a 6-gram model. So what we do is we have all the tokens of our data set in the dataset tokens array. Okay. So what we want is we want to break it down into sequences of 6. So say for example, if we have an array, we want to find out the first sequence of 6, then we want to find out the second sequence of 6, then we want to find out the third sequence of 6, then the fourth sequence of 6, and so on. Okay, so this will be like element 1 to element 6, then this will be element 2 to element 7, then this will be element 3 to element 8, and so on. Okay, so that is exactly what we are doing here. So dataset tokens are all the tokens. So what we do is, for each particular review, what we do is we iterate until the length of the review minus 6, because the last one will have all the 6 tokens, and then we create this n-grams array. So our n-grams array, okay, so let me show you what this data set tokens looks like. Okay, so this is data set tokens. Okay, this is just first review. This is the first review. Okay, I rented I Am Curious. This is probably the name of the movie. I rented I Am Curious Hello from my video store, etc., etc., etc. And we get the entire, all the tokens in the first review. So this review tokens variable holds the tokens of one particular review at a time, and we are iterating over the entire data set. So one review at a time, and then we iterate on each token from the review, and we sort of extract all the 6 grams from it. Okay, so our n-grams array will essentially contain, so see, I printed here. So n-grams of 0 and n-grams of 1, these are the first 2 n-grams. If you look at it, so what we will basically get is right. So this is our first n-gram, and this is our second n-gram. So see, there is an overlap. 3, 2, 4, 5, 6. Yeah, 3, 2, 4, 5, 6, and then the next one 7. Okay. This is because we are running a sliding window on the review, and we are extracting all the n-grams. Okay. So I rented I Am Curious Yellow from, and then rented से शुरू हो गया दूसरा वाला, यहाँ से दूसरा n-gram शुरू हो जाता है. Okay. So this is how we break our data set into n-grams. We are making 6 grams. Okay. And अब इसको हम x और y में कैसे split करेंगे? Our first 5 will be the x, जो हमारे LSTM का input होगा, and this is what we will expect our LSTM to output. Okay. Is this bit clear? This is important for language model training. So language model में यही different होता है कि you don't need a separate label, you only need a corpus. Okay. अब यहाँ पे हमने वो IMDb डेटा सेट में एक्चुअली एक सेंटिमेंट एनालिसिस कुछ था, बट हमने वो सेंटिमेंट लेबल को डिस्कार्ड कर दिया है, वो हमारे काम का नहीं है इस असाइनमेंट में. इस what we are trying to do is we are trying to learn all the text which is there in the IMDb corpus and create a language model out of it. अब language model का मतलब क्या है कि a model that can talk just like the IMDb dataset. It can produce text similar to IMDb dataset.
ओके। और वो हम कैसे कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ 6 ग्राम मॉडल टू डू दैट, एंड हमने उसमें से 6 ग्राम सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए, एंड नाउ वी आर सपोज टू डिफाइन अ मॉडल एंड ट्रेन ओवर इट। ओके, सो मॉडल डेफिनेशन कैसे होएगी, ये we will use 5 of these 6 as input and 1 as, ये हमारे पास हो जाए तो हम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कोई भी 5 वर्ड्स दे सकते हैं, एंड देन द मॉडल विल कंटिन्यू टॉकिंग इन एन ऑटो रिग्रेसिव फैशन। ये एक को जनरेट करेगा, उसको हम वापस इसमें प्रीपेंड कर देंगे, जैसे ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग होती है, और वापस मॉडल को इनपुट दे देंगे, तो फिर वो कुछ आगे बोलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके ओके। हाँ, तो ये कुछ है कि मैंने एनग्राम्स वाले एक्सप्लोर करा, एनग्राम्स का 10,000 एनग्राम कौन सा है, तो ऐसा कुछ टेक्स्ट निकल के आया है उसका, हैव टू से दैट लव इज समथिंग। ओके, सो हैविंग सेड दैट, अब हमने हमारे डेटा को एनग्राम्स में प्रोसेस कर लिया है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ डेटा सेट ऑब्जेक्ट एंड अ डेटा लोडर ऑब्जेक्ट, जो हमने पाइटॉर्च में देखा था। वी नीड अ डेटा सेट एंड अ डेटा लोडर। सो डेटा सेट, हमने एक टेंसर डेटा सेट करके एक रेडीमेड क्लास रहती है, वो टेंसर डेटा सेट से हमने एक डेटा सेट बनाया। सो दिस इज द सेम थिंग, हम डिवाइस का अगर अवेलेबल है तो, ये एनग्राम्स वाला जो हमारा वेक्टर था पूरा, एनग्राम्स हमारी एक लिस्ट थी, एक एक लिस्ट में इतने सारे आइटम्स थे। हाउ मेनी, 69,15,344 एनग्राम्स। ओके, सो ऑल दीज एनग्राम्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू अ टेंसर, ताकि पाइटॉर्च को दे सके, तो सिंपली टॉर्च डॉट टेंसर कन्वर्ट कर लिया, एंड ng डॉट शेप प्रिंट करा दी, तो ये शेप प्रिंट हो गई। दिस इज व्हाट वी वांट। अब इसको x और y में हमने स्प्लिट कर लिया। सो x और y, वही लास्ट वाला जो कॉलम है, सो ये इंडेक्सिंग सबको समझ में आनी चाहिए, वेदर यू आर यूजिंग numpy और यू आर यूजिंग pytorch, ये इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, both of them are 2 dimensional, right? So in the first dimension we are selecting all rows. Okay, same here also, we are selecting all the rows. आई होप दिस बिट इज क्लियर, कि सारी रोज हमने सिलेक्ट करी, एंड यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करते टाइम पे हमने ऑल एक्सेप्ट द -1 कॉलम, विद द लास्ट कॉलम 0 से लेके -1 से पहले तक का सब सिलेक्ट किया है, विच इज आवर x। ओके, एंड y हमारा खाली लास्ट कॉलम होगा, तो लास्ट कॉलम में सिर्फ हमने यहाँ पे -1 लिखा है। यहाँ पे फर्क देखना, यहाँ पे कोलन का ही फर्क है, लेकिन दैट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। ये कोलन लगा देने से आवर x becomes 0 to n -1, and our y becomes only the -1 column. Okay, this is indexing, PyTorch या NumPy में similar kind of indexing होती है। Okay, x dot shape, y dot shape, and then we get a data set object here, and अच्छा, ओके, वी क्रिएट आवर डेटा सेट ऑब्जेक्ट। डेटा सेट ऑब्जेक्ट हमने क्या देखा था डे बिफोर यस्टरडे, उसकी दो ही यूटिलिटीज होती है। फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड द लेंथ ऑफ द डेटा सेट। सेकेंड, इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड एन आइटम एट अ गिवन इंडेक्स। वो इसे स्क्रिप्टेबल होना चाहिए, कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 15 लिख दिया तो 15th एलिमेंट आ जाना चाहिए, ओके, या 16th एलिमेंट आ जाना चाहिए। ओके, so again, what do we do is we split our data set into training and validation। 90% हमने ट्रेनिंग में रख दिया, बाकी हमने वैलिडेशन में रख दिया। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हमने एक बैच, हाँ, अब डेटा लोडर बनाएंगे, सो दैट वो ट्रेनिंग पाए। उसको एक बैच साइज बता दिया 1024। इट इज़ अ ह्यूज बैच साइज, बट दिस वर्क्स बिकॉज ये मॉडल पे जीपीयू है कोलैब पे। सो और हमारा डेटा बहुत छोटा है, क्योंकि 6 ग्राम है, तो कुछ है नहीं, 6 नंबर है खाली, तो 1024 टाइम्स 6 इज नथिंग, 6 KB। ओके, so this is our training loader and validation loader are ready। shuffle हमने कर दिया है। हाँ, next। okay, now this is our model। okay, this is the important bit, जहाँ पे हमारा, since हम n-gram मॉडल की बात कर रहे हैं, तो हम 5 इनपुट देंगे और 1 आउटपुट लेंगे। ओके, सो हमारी फर्स्ट लेयर वही एम्बेडिंग लेयर होगी। दिस एम्बेडिंग the token IDs to one hot vectors to a dense embedding। okay, हम vocabulary size दे देंगे और embedding का dimension दे देंगे। vocabulary size हमारा जो हमने शुरू में डिफाइन किया था, vocabulary ये 49,447। ओके,
और ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना, हमने खाली वही वर्ड्स लिए जो एटलीस्ट 2 बार आए हैं या 2 से ज़्यादा बार आए हैं, बाकी सारे वर्ड्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो वो सब की जगह पे UN के अननोन टोकन चले जाएगा। सो दिस इज दैट इज वाई आवर वोकेबुलरी इज फार लेस। परसों जब हमने किया था तो 4 लाख कुछ वोकेबुलरी आई थी। ओके, सो yeah, we get an embedding here. So we have our vocabulary size as 49,000 and then we have our embedding dimension जिसको हम 32 दे रहे हैं. Okay, ये इसके साथ आप खेल के देख सकते हो. You can play around with this, you can vary this, and you can see at what particular embedding dimension is rich enough to hold for the task that you want it to perform. You want the model to perform. ओके, नेक्स्ट हम जैसे यहाँ पे हमने nn.rnn की लेयर लगाई थी, वैसे nn.lstm है. एक एग्जांपल मैंने दिया भी था आपको, आपके खुद को रन करने के लिए, वो नोटबुक में है, वो कैनवस पे है. आई होप आपने देखा हो. एंड देन ये nn.lstm है. lstm में आप वही सारी इंफॉर्मेशन बताओगे कि एम्बेडिंग का डायमेंशन क्या है और हिडन साइज उसका क्या है, राइट. एक lstm में क्या होता है, एक ht और ct, लॉन्ग टर्म स्टेट, शॉर्ट टर्म स्टेट. सो बेस्ड ऑन दैट आप एम्बेडिंग का डायमेंशन बताओगे कि आपका इनपुट जो x आ रहा है वो किस डायमेंशन में है, और हिडन जो डायमेंशन होएगा उसी डायमेंशन की h और c दोनों होएगी. एच टी भी उसी डायमेंशन का होएगा, सी टी भी उसी डायमेंशन का होएगा. एंड वो काम कैसे करता है, xt-1 और सॉरी xt एंड ht-1 आर कॉन्कैटिनेटेड, उससे गेट्स कंप्यूट होते हैं एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे जाके आउटपुट जनरेट होता है. ओके, लास्ट में, हाँ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन. इन अ लैंग्वेज मॉडल वी वांटेड कि लास्ट लेयर ऐसी होनी चाहिए जो लास्ट आउटपुट से लेके एक वोकेबुलरी पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करे. दिस वन, ओके, दिस काइंड वी नीडेड अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस काइंड. तो हमें एक वेक्टर चाहिए इस तरह का. तो हमें क्या चाहिए, हमें एम्बेडिंग से नहीं है, हमारा मॉडल जो है वो हिडन डायमेंशन के डायमेंशन का एक आउटपुट देगा. उसका जो साइज होगा वो हिडन डिम के बराबर होगा. तो वो हिडन डायमेंशन को लेके हमको वोकेबुलरी के साइज में कन्वर्ट करना है. सो वी नीड अ लीनियर लेयर. लीनियर लेयर यही होती है, डेंस लेयर. सो वी नीड अ लीनियर लेयर between hidden dimension as well as the vocabulary. Okay, so once ये लीनियर लेयर लग गई, अब उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, अब फॉरवर्ड कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम. जो भी हमारी पहले पहले हमने एक्स हमारे जो भी इनपुट आया उसको एम्बेडिंग, हमारा इनपुट इज आवर सीक्वेंस ऑफ numbers. Okay, the numbers that we have given, the indices that we have given in our vocabulary. तो हमारे पास वो आएगा. So in our n-gram it is of length 6 या 5. x में 5 है and y में 1 है, तो x यहाँ पे आएगा तो 5 का array आएगा, 5 numbers. So we will give it to the embedding layer. ये उससे पहले 1 hot बनाएगा, 1 hot से dense बनाएगा. Okay, this is the dense embedding. These dense embedding go through an LSTM. LSTM में HT, CT सारा कुछ आ जाएगा. हमें किस चीज़ से मतलब है, लास्ट टाइम स्टेप का H जो आएगा उससे मतलब है. So that is our final output. That is what we are concerned with. We are concerned with the final output of the LSTM. So what we then do is हमने जो linear layer लगाई थी, we pass this final output through our linear layer and we get an output. So this output will be of this vocab size dimension. Okay, ये FC का जो dimension है vocab size, तो ये out का dimension vocab size रहेगा. And we return this entire thing in the model. Okay, again we have our embedding dimension, hidden dimension, and then we initialize the model. We initialize our loss, cross entropy loss, and then we run the optimizer, and then the model itself. Okay, we print the model itself. Remember, we had printed in the similar fashion. We had printed the GPT-2 model की details also. When you write print of model, so it will print the entire model architecture. तो ये हमारे मॉडल में 3 लेयर है, एक एम्बेडिंग लेयर है, एक LSTM लेयर है और एक फुली कनेक्टेड लीनियर लेयर है. ये आउटपुट फीचर्स आ गए हमारे वोकैबुलरी के बराबर 49447. ओके, सो देन वी हैव आवर ट्रेनिंग लूप. ये वैलिडेशन का फंक्शन है, इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से देख लेते हैं.
So we are defining number of epochs is 5, and ये यहाँ पे हम losses collect करेंगे ताकि हम plot बना पाए. Then in the loop we first tell PyTorch that we are set the model in training mode so that all the layers which perform differently in training and eval mode can behave accordingly. Then we define our total loss as 0, and then we start iterating over our train loader. So we are first setting the gradients to 0. Our y hat prediction जो है हमारा मॉडल ऑफ x लेके वो हमने prediction कर लिया. ये हमने C loss cross entropy loss ले लिया. Then we do a loss dot backward. उससे क्या होता है, gradients calculate हो जाते हैं, and then हम optimizer को step करने बोलेंगे ताकि weights update हो जाए. So all these weights get updated here, and then we simply add the total loss, store it here. Okay, if you want to print all these details batch wise तो यहाँ पे कर सकते हो, but वो बहुत ज़्यादा logs हो जाते हैं. So okay, training this model takes some time. आप देखो after almost 2 to 3 minutes, 2 minutes 45 seconds ये एक epoch रन होता है. So I am not running it now. एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ, उसके बाद इसको रन कर लेंगे. Okay. So yeah, so ये पहले ट्रेनिंग करी, उसके बाद once the epoch is completed, for epoch this ये पूरा एक बार ट्रेन लोडर पूरा वैल्यूएशन मतलब वैलिडेशन रन करेंगे. वैलिडेशन में भी हमारे पास कुछ एनग्राम्स है. we had separated some validation data. So what we will do next is we will perform a forward pass on those particular engrams and see whether our output matches to what we are expecting. Okay, and then we will calculate some form of accuracy. So yeah, this is training loss we are appending here. Training losses dot append average validation. So eval, this is the function that we are running. Average validation is eval model validation loader and cross entropy loss. This is the same function that was there here. Okay, so it does exactly the same thing but model dot eval mode में. It tells the model that it is now in inference mode. तो the layers like dropout etc अगर कुछ है तो वो उसके हिसाब से behave करनी चाहिए. Okay, and then we disable gradient calculation, and then we write xy in validation loader, and then we do a forward pass, y hat calculate किया, loss calculate किया, and validation loss calculate किया. बस backward कुछ नहीं करना है अभी, validation में backward कुछ नहीं करना है. So return कर दिया loss. तो ये loss हमने एक array में store करके रख लिया. Okay. So if you see here, the losses are actually reducing 5.7, 5.2, 5.0, 4.9 and 4.8. Here also it is reducing but rather slowly, थोड़ा सा धीरे है. 5.3, 5.1, 5.19, 110, 5.06, 5.03. Okay, so some learning is happening. Okay. And after it trains for 5 epochs or so, when we plot the loss curve, we get a decent loss curve. Okay, we get the training loss is reducing much faster. यहाँ पे शायद इस ये point cross हो गया, इस point के बाद overfitting start हो गई है, and from here onwards validation loss. So validation loss is still decreasing, but not as much as the training loss. But कुछ तो learning हो रही है अभी. It could have continued further, है ना? Okay. So finally, the interesting part, हमने language model जो train किया है उसको run करके देखेंगे. Our very small form of GPT, not transformer technically, but yeah, LSTM. So we write a function next. ये क्या करेगा, हमसे कुछ 5 words ले लेगा, और remember we have a 5 gram model, right? So we need at least 5 words to start. फिर एक बार वो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो भी मॉडल आते जाएगा उसको हम ऑटो रिग्रेसिव इनपुट देते जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड में क्या है, एक सेंटेंस ले लेगा ये 5 वर्ड्स का, एंड एड सो वी एक्चुअली आउटपुट टॉप 3 वर्ड्स एट ईच टाइम स्टेप. ये नंबर ऑफ वर्ड्स है. ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स टू आउटपुट एट ईच टाइम स्टेप. अब देखो कैसे होता है. सो यू आपने जो सेंटेंस दिया ये तो इंग्लिश में दिया. सो फर्स्ट हम इसको टोकनाइजर के थ्रू भेजेंगे, एंड वी गेट आवर encodings right, and we format the input in the format that model wants. Okay, ये input हमारे पास मॉडल के फॉर्मेट में torch.tensor की फॉर्म, हम वो कैब ऑफ w करके वो सब कर लिया जो फंक्शन जो ऊपर लिखे थे.
serialization and encoding. उसके बाद what you do is हाँ, so you run a prediction. Okay, when you run a prediction, you give the model the entire input and जो भी आउटपुट आया predictions, उस predictions में से आपने top k निकाल लिए. Now top k में आपने बोल दिया 3 मेरे को चाहिए, right? Okay. Now okay, so this is the 3 that basically I was saying that हर step पे हम कुछ top 3 words देखेंगे. We will still this example will only showcase greedy sampling. हम सिर्फ top वाला ही लेंगे, लेकिन मैंने print कराने के लिए आपको दिखाने के लिए कि और 2 options क्या हो सकते थे. If we were using a beam search or if we were using top k, so this would print all those 3 options. Okay, so torch.topk will give you all the top 3 outputs, and then we basically print, we convert it to text because these will be numbers. तो इन नंबर्स को, ये ऑप्शंस में वो नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हमने एक टू टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और उसको डिक्शनरी में यहाँ पे उसको ऐसे करके प्रिंट कर दिया. ओके, सो देन व्हाट वी डू इज हम ये देख लेते हैं कि इनका जो मैक्स है वो कौन सा है. जो हमारा सबसे पहला वाला टॉप के में तीनों में से सबसे पहला वाला जो है उसको हम वापस अपेंड कर देते हैं और वी सॉर्ट ऑफ कीप इट रोलिंग, राइट, अंटिल हमारा n वर्ड्स मीट हो जाए. तो n वर्ड्स हमने इस एग्जांपल में 15 सेट कर रखा है यहाँ पे. सो वी विल जनरेट अप टू नेक्स्ट 15 वर्ड्स. इफ यू रिमेंबर, हमने कल जब प्री ट्रेन मॉडल यूज किया था तो हमने एक आर्ग्यूमेंट सेट किया था max words equal to 50, something like that, right? Yeah, max length is equal to 50. So this is that max length. n words बोला है यहाँ पे. So n words is the number of words that is for which the autoregressive loop will run. Okay, now let's क्या कह रहा है. So I wrote, I went to this. Okay, let's start the training meanwhile. इसको 5 नहीं तो 3 epoch तो चला ही दे. Okay. हाँ, इसको देखते हैं एक बार. ये भी ठीक है. हाँ, इसको छोड़ देते हैं. Okay, so first let's so Ankur, I'll take your question in a bit. Just let me finish this. So the next function, ये जो हमने ऊपर define किया है, this will basically एक sentence generate करने, तो वो बोलते जाएगा. So I wrote, I went to this film, और इसने बोला next token should be full stop, और it could be comma और and also. मतलब ये जो इसकी probability सबसे ज़्यादा थी, उससे कम comma की थी, उससे कम and की थी. The most probable word was, then it was comma, and then it was and. So the sentences could have been, I went to this film, and then I went to this film, comma, something, something, and I went to this film, and so on, so on. ऐसा. So right, words according to this model. Okay, then after full stop, it says I went to. So let's look at the sentence that it is trying to make. I went to this film, full stop. I am not sure that it was a good movie. Okay, very valid sentence, right? So a model of embedding dimension 32 and hidden size what 64, ऐसा कुछ लिए थे हमने, right? 64, right? So वो भी grammatically correct. So that is and this was after training for 5 epochs, right? So when we train models such as GPT with billions and billions of parameters, of course the English will be appropriate. अभी इसमें कुछ और problems होती है. If you closely वो repeat करना शुरू कर रहा है, I am not, again it is saying I am not, तो वो same चीज वापस आना शुरू हो जाती है. Look at this. I, the, it. M was think. Okay. Not sure, glad. So, yeah. But then, yes. So, these are the at each time step. So, I went to this film, full stop. The next sentence could have started with I. It could have started with the. It could have started with it.
बट प्रोबेबिलिटी आई की ज़्यादा थी, तो हमने आई को इसमें वापस अपेंड कर दिया और आगे दिया, तो नेक्स्ट आया अपॉस्ट्रोफी एम. ओके, सो दिस इज आवर सिंपल टॉप पी सैम्पलिंग या टॉप के सैम्पलिंग करनी है. तो नाउ आई थिंक वो लॉजिक हम सबको अब आता है. पे निकाल ही रखे हैं टॉप 3, तो इन्हीं में से एक रैंडम आउटपुट कर सकते हैं. दैट कैन बी वन थिंग. और टॉप पी में हम एक पी की वैल्यू मान के, थ्रेशोल्ड मान के अकॉर्डिंगली सैम्पल कर सकते हैं. तो दिस वी कैन मेक द सेम मॉडल क्रिएटिव, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, हमने 5 इपॉक इसको ट्रेन किया था, तब ऐसा आउटपुट आया है. वी आर गेटिंग अ परफेक्ट, ग्रामेटिकली परफेक्ट सेंटेंस. नाउ आई एम ट्रेनिंग समथिंग फॉर 3 इपॉक्स एंड लेट्स सी कि उसमें क्या आउटपुट आता है. अभी एक इपॉक हुआ है, दूसरा चल रहा है. मीनवाइल आई विल टेक क्वेश्चंस. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप. डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है? So this is all that I have. This was a mini language model that we can create using a simple, no transformer involved yet, no attention mechanism, nothing. Okay, Ankur has asked, please tell the basic difference between a language model, small language and large language models. Okay, Ankur, so large language models are not academic terms. These are actually in uh, uh, in the community based on the size of models. Okay, just to distinguish between so there is no perfect threshold कि इतने number of parameters के ऊपर large language model है, इससे नीचे small language model. Really, that number is considered number I think will keep rolling with time, but अभी वो number I think 1 billion के आसपास है, 1B. So में जितने भी मॉडल्स हैं वो सबको थोड़ा सा लार्ज माना जाता है. एंड स्मॉल लैंग्वेज मॉडल मतलब इवन 1 बिलियन मॉडल, 1 बिलियन पैरामीटर या 2-3 बिलियन पैरामीटर को भी कई बार लोग स्मॉल बोल देते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ द करंट मॉडल्स इज रीचिंग अप टू ट्रिलियंस, राइट. सो ऐसा कुछ फिक्स्ड एक थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसके ऊपर ही लार्ज है, इसके ऊपर ही स्मॉल है. लेकिन हाँ, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर एम्बेडिंग जनरेशन. जैसे when the larger ones are usually 400B से शुरू होते हैं, एंड उसके जो एम्बेडिंग मॉडल्स आते हैं वो 0.6 बिलियन मतलब 600 मिलियन से शुरू होते हैं, एंड यूजुअली 4 बिलियन 8 बिलियन तक भी एम्बेडिंग यूज करते हैं. सो 8 बिलियन के ऊपर एम्बेडिंग यूज नहीं करते. 1 बिलियन 1B to 10B ये रेंज है, इसके बीच में कहीं वो नंबर है जिसके नीचे सब कुछ स्मॉल है, उसके नीचे सब कुछ लार्ज है. But right, the idea is simple कि large language models contain a lot of language information. They are information dense. They are not easy to device. But small language models, on the other hand, are simpler models which can run on consumer-oriented devices, low memory devices, and they are focused on one particular domain. It makes much more sense कि अगर आप सिर्फ legal domain में हो तो आप पूरा world doesn't make sense to understand what cricket is and what मतलब क्रिकेट की क्या क्या डिटेल्स हैं, और या साइंस की रिसर्च पेपर्स की डिटेल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर यू डोंट नीड टू ट्रेन those kind of things if you are use case a model which has to be used in a, so that is a small that would be a perfect use case for a small language model. Okay, now language model in itself कल आई थिंक सर ने भी आपको कुछ बताया होगा इसके बारे में. Itself is any model that can approximate a language, that can show some kind of language understanding. The most common type of language model these days is a regressive language model. अब ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल में जो टास्क होता है वो होता है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन. बट अगर हम एनकोडर मॉडल्स की बात करें तो बर्ट है. बर्ट में क्या होता है, अब जैसे आई शो यू एन एग्जांपल. तो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन में क्या होता है, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सन राइजेस इन द, एंड देन ये प्रेडिक्ट करो, दिस इज द टास्क. ओके, मास्क लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है, ये होता है रैंडमली टेक्स्ट के बीच में से कुछ वर्ड्स मास्क कर दिए जाते हैं, एंड
द मॉडल इज आस्क्ड कि वो लोकेशन प्रेडिक्ट करो, मतलब नहीं, वो लोकेशन नहीं, ये प्रेडिक्ट करो कि इस जगह पे क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स. सो व्हाई इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अ ऑटो रिग्रेसिव मॉडल? इज बिकॉज इस केस में उसको फ्यूचर के टोकन्स की भी नॉलेज होती है. सो एनकोडर मॉडल्स के लिए ये ज़्यादा सूटेड एप्लीकेशन होती है. दैट्स वाई एम्बेडिंग जनरेशन के लिए कई सारे एनकोडर मॉडल्स भी यूज होते हैं. ओके, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर जनरेशन, एंड एम्बेडिंग के लिए एनकोडर मॉडल्स इसीलिए प्रेफर किए जाते हैं बिकॉज इट कैन लुक एट द फ्यूचर टोकन्स एज वेल. डिकोडर में हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे? मास्क्ड अटेंशन, मास्क्ड मल्टी सेल्फ अटेंशन. मास्क होने की वजह से क्या होता है? फ्यूचर टोकन्स पे अटेंड करने की कैपेबिलिटी चली जाती है. वो अटेंशन मास्क ऐसे बनाया जाता है कि वो डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, राइट? विच मीन्स आगे का आगे के टोकन्स ट्रेन होते टाइम पे आगे के टोकन्स नहीं देख पाते. सो इट इज मेंट फॉर नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन ओनली. सो ये एक तरीका है. ये एक और तरीका है एक लैंग्वेज मॉडल बिल्ड करने का. एक एनग्राम वाला लैंग्वेज मॉडल हमने आज बिल्ड किया है, जो विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द सॉर्ट्स, जिसमें हमने फिक्स कर दिया कि ये 5 ही रखेंगे और 5 के आगे एक वर्ड आपको प्रेडिक्ट करना है. दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर. तो these are some of the ways in which a language model can be built. एक और तरीका होता है कि you can say, हाँ, you can so एक और तरीका होता है जिसमें अच्छा, ये पूरा ही चेंज हो जाएगा. So जिसमें basically what happens is you then you tell another model to generate some words from an existing text. आपने ऐसा ही कुछ किया, पहले आपने ये हटा दिया और उसके बाद आपने एक दूसरे छोटे मॉडल से या किसी और मॉडल से या मैनुअली somehow you replace these words from something else, and then you ask a language model to sort of detect कि कौन कौन से मॉडल कौन कौन से वर्ड्स ओरिजिनल टेक्स्ट में थे और कौन कौन से वर्ड्स इसमें बाद में डाले गए हैं या किसी दूसरे मॉडल से रिप्लेस हुए हैं. उसको बोलते हैं रिप्लेस टोकन डिटेक्शन. सो दिस इज मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग, MLM. दिस वाज रिप्लेस टोकन डिटेक्शन एंड दिस वाज. सो ये कुछ तरीके हैं लैंग्वेज मॉडल बिल्ड करने के अलग अलग. ओके, सो आवर मॉडल हैज ट्रेन्ड. हमारा लॉस कब आ गया है? अब ये 3 इपॉक ही चला है अभी. सो फर्स्ट इपॉक, सेकंड इपॉक एंड थर्ड इपॉक हियर. ओके, नाउ लेट्स सी अब ये क्या बोलता है. ओके, अब देखो इसमें UN के आ गया है एंड ये सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ है. आई वेंट टू दिस फिल्म, द फिल्म इज अ बिट ऑफ द. हाँ, अ बिट ऑफ द और UN के. अब इसका मतलब अब ये यहाँ पे इंग्लिश गड़बड़ होना शुरू हो गई है. सो थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है. हमने पहले 5 इपॉक कर लिया था, सो दैट वाज प्रोबेबली बेटर. अब यहाँ पे हम कोई भी कुछ भी वर्ड्स दे सकते हैं. आई वेंट टू दिस मूवी yesterday and okay, and I wasn't expecting. Again, grammatically correct. The film is a bit of the. Again, the film is a bit of the. ये वही सेंटेंस आगे रिपीट होना शुरू हो गया. ओके, सो दिस इज अ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल दैट वी बिल्ट. अब इसमें से क्या हुआ? हमारा लैंग्वेज मॉडल तो खाली लास्ट 5 ही लेता है. 1 2 इनपुट दिया होगा. सो वट एवर सेंटेंस यू गिव, वो सेंटेंस का लास्ट -5 से लेके एंड तक, -5 अप टू एंड. सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक खाली ये इनपुट दिया है. आई वेंट तो इसने देखा भी नहीं. ओके, सो yeah, so any questions on language modeling?
Okay, thank you, Amit. If there are no more questions, I think we can wrap this session up. The next session will start from 4 o'clock. I will share the notebook on Canvas. You can try to run it. You can improve the model by increasing the dimensionality of the hidden layers. You can try to implement top K sampling, top P sampling. All these could be good assignments for uh, just playing around with code. Okay, so this template is something that I hope all of you are now starting to get a bit comfortable with PyTorch. I hope so. That was the intent, actually. This template sort of remains the same no matter what framework you go to. You have to first prepare the data, you have to define the model, you have to run your training loop, you have to do some kind of evaluation of accuracy or loss curves or whatever you want to plot. So this is all metric plotting, evaluation, and then you do inference and deploy the model. So any questions? Any other questions not just related to language modeling, but the other two sessions that I took, hands-on sessions, or uh, related to whatever Sir has taught so far, transformers or sequence models. Okay, so we'll wrap it up for now, and next session. Yeah, I'll just check with Sir once. I think otherwise we'll start at 4 itself. Okay. Thank you, man, for the demonstration. Yes, we will continue at 4 p.m. for the next session. Okay, sir. Thank you. Okay.